माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी। Now, papers to be laid on the table. श्रीमती सुषमा स्वराज। उपसभापति जी, आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित दस्तावेज में सदन के पटल पर रखती हूँ। जनरल रिटायर्ड वीके सिंह। माननीय उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष उल्लिखित क्रम संख्या 2 में सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। श्री राव इंद्रजीत सिंह। Chairman sir, with your permission, I lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Shri Prakash Javadekar. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Dr. Jitendra Singh. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। श्री विजय सांपला। महोदय जी, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची मत संख्या 6 पर मेरे साथी में मंत्री किशनपाल गुर्जर के समक्ष वर्णित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं। श्री बाबुल सुप्रियो। Permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you. श्री विजय सांपले। महोदय, आज की कार्यसूची में मत संख्या 8 पर मेरे समक्ष के नाम वर्णित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं। Now, zero or mentions. Dr. Satyanarayana ji. All right. Okay. TV channel, Now, if all of you, okay, Kanimodi, Srimati Kanimodi has given, Kanimodi, yes, yeah, please. I like to raise this issue, sir. First it was Perumal Murugan, the writer. Next it was Murugesan. Now it is Pudhiya Thalaimurai, the television channel, which has been attacked because of a television show in which a woman expresses her opinion about what she feels about a Mangal Sutra. And she has the television channel has been attacked. A reporter was attacked, hit, and there's in the net and through WhatsApp and other things, people working in the media house have been targeted personally, and even their families have been targeted, and things about them has been doing the rounds. And now today, this morning, early in the morning at 3 a.m., some 4 people in a bike have gone to the media house and hauled tiffin boxes with bombs in it at the media, and the people who've been, nobody has been hurt, but people over there have been shocked. And okay. No, this is against the expression, the media freedom. Yeah. This is against. Sir, this is not against the Tamil Nadu government. This is about freedom of expression. It is not against any government. A television medium cannot have. No. Home Minister is here. A television medium cannot have a discussion. What is this? And in Tamil Nadu, where Periyar was there, and Periyar has expressed all his opinions very clearly, and he had that kind of freedom. Other day, Honorable Brief A television channel my statement about a social issue. Sir, this is not about why do you want to look at it. Sir, this is a social issue. This is a I think Home Minister is here. Whether Home Minister would like to say something about it? Have you any idea? Yes. On this issue? On this issue not, it's another statement. It will be inquired. Yeah. Okay. Now you, all right, you have raised it. No, please. No, it's, all right. Now see. Now sit down. Can you sit down? Sit down. Now you please sit down. Okay. Now you please, all of you please. All of you resume seat. Nothing will go on record. You sit down. All of you resume seat.
give notice. No. Yes, you raised it. Yes, you can give notice. You can. It is not against. No. What do you want? What do you want? What, Namadeva Krishnan, what do you want? What is No, Kanimani, you spared yourself. Sit down. Now you sit down. No, you sit. no. Kanimani, please resume the seat. No. Resume the seat. What do you want? It is not against No, I know that. no. You need not say that. You didn't say again. Why do you say that? You did not say against anybody. Sit down. What is your problem, Namadeva Krishnan? No. To raise any issue in the 0 hour, there must be some proof or Ah, evidence. yes, sit down, agree. No. Okay, now you sit down. 0 hour. Now you sit down. Regular talk. A route must be. Yeah. No. Yes. What's it? Okay, sit down, agreed. Now you sit. You said, now you sit down. Oh, sit down. You said you sit down. Sit down. What is? Why I have not called you? No, you allowed after that. Yes, I allowed only here. Nobody else. No. Sit down. Yes. No. Sit down. Now I am not allowing anybody to raise this subject. This matter is not allowed. I heard the subject and I give the ruling that it cannot be discussed now. Give me notice if you want. Sit down. Yeah. Dr. Satyanarayana Jaitya, if you want to raise it, give me notice. Namadeva Krishnan, you can give notice. Sit down. Kanimari, sit down. You can give notice, Raja. Yes. Sri, No? It is no. Second. He assured on your instruction, you asked. होम मिनिस्टर स्टेटमेंट अभी बोला था पूछो I am not allowing any one of you. I am not allowing it. I am not allowing any one of you. If you want to raise, you give me notice. Namadeva Krishnan, sit down. Kanimari ji, sit down. A Raja, sit down. All of you. Now Home Minister to make a statement. Yes. 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 Sorry. Yeah. D Raja. Dear Raja. D means dear. Dear Raja. Now Home Minister to make a statement. Vice Chairman, No, sit down. Please sit down. No. For that I told you if you want to give notice. Vice Chairman, sir, I had made a statement on 9th March 2015 based on the report received from the government of Jammu and Kashmir regarding the release of separatist Masrat Alam Bhatt. I had also mentioned that more information in this regard is being collected from the state government. We have received a further report from the state government in this matter. The state government has informed that 27 criminal cases are continuing against Masrat Alam Bhatt. Masrat Alam Bhatt has been booked 8 times since February 2010 under Section 8 of the Jammu and Kashmir Public Safety Act of 1978. The last such detention order was issued by the District Magistrate, Jammu, on 15/9/2014. Such detention order issued by the District Magistrate, Jammu, is to be approved by the state government within 12 days of the issuance of such detention order as per Section 8(4) of the Public Safety Act. The detention order issued by the District Magistrate Jammu on 15/9/2014 was received in the Home Department of Jammu and Kashmir on 9/10/2014 after the lapse of 23 days, and hence the same
could not be approved. Vice Chairman, sir, the state government has further informed that there were no fresh grounds for detention as verified from the District Magistrate, Jammu. The grounds based on which earlier detention orders were quashed by the Honorable High Court, and this detention order contained the same old grounds of detention. The Honorable Supreme Court of India had also in March 2013 observed that if any fresh detention order is issued by the government of Jammu and Kashmir with respect to Masrat Alam Bhatt, the same shall not come into force for a period of 1 week from the date of communication of the order to enable him to pursue appropriate legal remedy. Vice Chairman, sir, after some correspondence with the District Magistrate Jammu and the State Law Department, the state government wrote to the District Magistrate Jammu on 4th February 2015 while their letter number Home PD 01 2014 dated 4/2/2015 informing that the detention order dated 15/9/2014 issued by him ceased to remain in force. The District Magistrate Jammu was further informed that a fresh order can, however, be issued for detention of the detainee after following the procedure prescribed in the Public Safety Act and directions of the Honorable Supreme Court. Thereafter, the detainee was released on 7th March 2015. The state government has also informed that a proper system is in place to have an effective surveillance over Masrat Alam Bhatt's activities. As and when anything adverse surfaces, appropriate action as envisaged by law will be taken. The intelligence apparatus and local police work in tandem, thereby facilitating planning of advanced and adequate deployment of law and order components from maintenance of peace and order in areas likely to be visited by Masrat Alam Bhatt and other separatist elements. Vice Chairman, sir, the Home Ministry has issued an advisory to the government of Jammu and Kashmir on the following lines. First, all 27 criminal cases registered against Masrat Alam Bhatt should be pursued vigorously and steps also taken as per law to challenge the orders pertaining to grant of bail to him in such cases. Second, a close surveillance must be ensured on such of the activities of Masrat Alam Bhatt and his other associates and his other associates and followers, which are detrimental to public order or the unity and integrity of the country in general and the state of Jammu and Kashmir in particular. Anything coming to adverse notice must be promptly reviewed in the light of the Public Safety Act and appropriate action taken immediately. Vice Chairman, sir, the state government will ensure, but this is the advisory of this Home Ministry of the central government, the state government will ensure that the surveillance and monitoring of the activity of the Masrat Alam Bhatt and his associates and followers, as mentioned above, is done in close tandem with the central government security and intelligence agencies in the larger interest of maintaining peace and public order and normalcy in the state of Jammu and Kashmir. Thank you very much. Okay, thank you. Now, 0 hour. I go to 0 hour. No. कर रहे हैं क्योंकि इनके सहयोग से सरकार बनी है, उन्होंने छोड़ा है। मैं एक चीज गृहमंत्री जी से सीधे पूछना चाहता हूं। माननीय गृहमंत्री जी, आपने कहा कि उस समय के जो कुछ भी था सब उस समय की सरकार ने किया, जो प्रेसिडेंट रूल में हुआ, आपने एडवाइजरी भी जारी कर दी। क्या आपने ये कभी कहा कि इस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाए? वहां
अगर उस No, भट्टी Naresh, I am not allowing a clarification now Supreme because it was not a statement like that. He was only giving clarification. Okay, okay. No, let me take up 0 hour. Let me take up 0 hour. Let me take up. No, no. I am not allowing a clarification like that. It was not a statement for clarification. Okay. You want to say something With more? your permission, I would like to clarify. Yeah, please. My dear colleague, Mr. Naresh Agrawal, first point of advisory of Home Ministry. All 27 criminal cases registered against Masrat Alam Bhatt should be pursued vigorously, and steps also taken as per law to challenge the orders pertaining to grant of bail to him in such cases. Okay. Now, Sri Satyanarayan Jaitya. No, I am not allowing. It is not a clarification session. Now, listen. He was only clarifying on the statement he made on 9th. On 9th, he said he will give more details. He was only giving more details. If you want to raise it, give another notice. That will be considered. Give a notice. 0. And now, Satyanarayan Jaitya. उपाध्यक्ष जी, मैं प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। हमने उच्च शिक्षा के लिए प्राय प्रावधान किए हैं, किंतु गांव के, गरीब के, दलितों के, वंचितों के, सामाजिक आर्थिक न्याय से प्रभावित लोगों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अच्छी शिक्षा मिले, जिसके कारण वे अपने आगे के शिक्षण में अच्छा स्थान प्राप्त कर देश में सर्वोच्च सेवा के स्थानों को प्राप्त कर सके। किंतु मेरी जानकारी में, और सब लोग ये जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा राज्यों के सहारे आगे बढ़ती है, और राज्यों में प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई के लिए, परीक्षा के लिए, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई ज्यादा अवसर नहीं है। एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में हर एक दर्जे में उनको आगे बढ़ाया जाता है, और कहीं कहीं ये 8वीं कक्षा तक, दर्जे तक, माध्यमिक शिक्षा तक उसको आगे बढ़ाने का काम होता है। उसके बाद फिर उच्च स्तर पर शिक्षा की बात होती है। पर गाँव में ये शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं है। हमारे यहाँ पर शिक्षा के भी प्रकार हैं, और शिक्षा में यह है कि गरीब की शिक्षा गरीब है, और वित्तीय संसाधनों से जिसके पास संपन्नता है, ऐसे लोगों की शिक्षा में संपन्नता है, समृद्धि है, ऐसे ही लोग आगे और आगे बढ़ते जाते हैं और उनके उच्च स्थान पर प्राप्त करने के लिए अवसर मिलते जाते हैं। मेरी चिंता यह है कि गरीब के बच्चे को, दलित के बच्चे को, सामाजिक आर्थिक न्याय से वंचित लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की सहायता से प्राथमिक स्तर पर उच्च शिक्षा को प्राप्त कराने के उपाय करें। हमने यहाँ से भी और केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम किया है, और केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों के लिए स्थान है। जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का काम किया है, सैनिक स्कूल खोलने का काम किया है, किंतु वो सीमित हो गए और उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि केंद्र सरकार इस प्रकार के गुणवत्ता वाले एजुकेशन के सेंटर्स में, केंद्रीय विद्यालयों में, जवाहर नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा खोल करके गरीब बच्चों को प्रवेश देने के लिए काम करने का काम करे। और मुझे विश्वास है कि इस काम में केंद्र सरकार जितनी वित्तीय सहायता राज्यों को करना चाहिए वो करेगी। मैं भरोसा कर सकता हूँ कि निश्चित रूप से इस काम के लिए हमारे यहाँ पर भी हमने केंद्रीय विद्यालयों में संसद सदस्यों को 6 का कोटा दिया हुआ है, किंतु मैं कहना चाहूँगा कि इसके कोटे को बढ़ा करके 10 करके उसमें अनुसूचित और जनजाति के लोगों के लिए स्थान आरक्षण करने का काम करे, जैसा कि हमने एमपी लैंड में किया हुआ है। और इसलिए मैं अपने आदर्श ग्राम में भी शिक्षण की व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करूंगा। सरकार भी आदर्श ग्राम के लिए विशेष प्रावधान करके नव विद्यालय as all the associating names may be added, names of all those persons may be added. Rajkumar Doot, please. Sir, there is a famous saying, "Jaan hai to jahan hai," meaning thereby no one wants to die through death in inevitable one day. Only those extremely fed up with their lives for whatsoever reason go to the extent of committing suicide. This is exactly happening to the poverty-stricken and debt-ridden farmers of my home state Maharashtra.
where Vidarbha and nearby areas have become suicidal for them. They leave behind their families consisting of old parents, spouse and children to fend for themselves after suffering at the hands of cruel destiny by losing their bread earner. Last month, when Maharashtra and rest of the country was celebrating Makar Sankranti festival, 11 farmers committed suicide, 3 each in Aurangabad, where I am my town, and Pune, 4 in Amravati and 1 in Nagpur. Sir, the kins of helpless farmer committing suicide are given compensation of planetary sum of rupees 1 lakh by the government. But even this planetary sum is denied to the kin of more than 50% of farmers committing suicide due to strange rules that the deceased did not have a bank account, loan against the cultivation plan in the same season, or did not own a piece of land. This is totally unjust. There should be no restriction of this regards. When precious lives are lost, government has to compensate in the welfare state like ours. Sir, though money cannot bring back the deceased farmers, but the compensation can give some monetary relief to the kins. But the planetary sum of rupees 1 lakh is far from sufficient. I therefore urge upon the government to raise it to minimum of rupees 5 lakhs. At the same time, I urge upon the government to remove the conditions imposed in the rules of paying compensation to kins of farmers who committed suicide with retrospective effect, so that some relief is provided to the kins of unfortunate farmers who took the extreme step of committing suicide. Thank you. Thank you, Sri Vijay Devdal, Jawaharlal Devdal to associates. Yes. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं विदर्भ मराठवाड़ा सहित पूरे महाराष्ट्र में ओलावृष्टि से सूखे प्रभावित इलाकों के किसानों की मुसीबत की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ओलावृष्टि और अकाल के दोहरे संकट से जूझते महाराष्ट्र के किसानों को राज्य केंद्र सरकार ने भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। ये दोनों संकट की स्थिति में सरकार द्वारा किसानों को 2 हेक्टेयर की मदद देने के स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद महाराष्ट्र शासन ने केवल 1 हेक्टेयर का मुआवजा देकर किसानों का मजाक उड़ाया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। महोदय, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों की खरीफ और रबी की दोनों फसलें तबाह हो चुकी है। नागपुर संभाग में खरीफ और रबी दोनों ही सीजन में अकाल, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। ऐसे में आर्थिक तंगी के समय में सरकार की ओर से मदद करने के बजाय उन्हें कुछ नहीं मिलने के कारण वहां पर विदर्भ में, मराठवाड़ा में और अन्य भागों के अंदर, यहां तक कि ये पूना तक पहुंच गए, वहां पर आत्महत्या हो रही है। वर्षा पर निर्भर किसानों की संख्या विदर्भ के अंदर 6,40,018 है, जो कि 9,14,744 हेक्टेयर इलाके में खेती करते हैं। दूसरी ओर सिंचाई पर निर्भर किसानों की संख्या 1,17,435 है। ये किसान 1,65,643 हेक्टेयर इलाके में खेती करते हैं। सर, ये और दोनों इशू थोड़ा अलग है। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। ये वो अलग है, ये मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों एसोसिएट किया। सर 1 मिनट दे दीजिए मुझे, 1 मिनट खत्म कर रहा हूं मैं। नागपुर संभाग में 5 लाख से ज्यादा किसानों को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन सरकार ने केवल 500 करोड़ रुपए का मदद मंजूर की थी और उसमें भी आधी उन्होंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। मराठवाड़ा संभाग में अभी जैसा कि दूध साहब ने बताया है, रबी फसल का बड़े पैमाने के ऊपर बस एसोसिएट सर, या उसको मेरा जो लिखे हुआ है उसको आप ले लिए सर। सर आज ये देश किसानों का है सर। सर यू आर टेकन मोर देन 2 1 और 9 मार्च को बेमौसम बारिश पड़ने से जो नुकसान हुआ है उससे ज्वारी काली पड़ गई है, चना और गेहूं सफेद होने की आशंका है। अंगूर, आम, अनार की फसल सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है और मुखेड़ में भारी नुकसान हुआ है। परवड़ी जिले के अंदर आधी फसल तबाह हो चुकी है। उस्माना जिले में रबी की नुकसान हुआ है, बगीचे को नुकसान हुई है। ओके, टाइम ओवर सर। टाइम ओवर
Shri Vivek Gupta, time साहब over. देखिए Yes, you can associate. Vivek Gupta, time over. देखो, देखो. Vivek Gupta. Yeah, thank you, sir. You are taken 3 minutes. Sir, through you, I would like to draw the government's attention towards its total apathy on the Air India and its functioning. Sir, recently, close to 1 lakh passengers have suffered because 70% of the flights are either delayed or cancelled in the months of January and February. Sir, often it has happened with us and common passengers that we reach the airport and we are told the flight is delayed. And sir, the delay, they don't tell you how much it is delayed. It is delayed half an hour. They tell us it is delayed for half an hour, and like that, delay for 3 hours at a stretch. Sir, if they know that it is going to be delayed for 3 hours, then they are not informing us. So the principal reason when we go behind this is that they have shortage of crew. So shortage of crew is something they have known for last 1.5 years. But no steps have been taken to recruit the crew or do anything. Sir, 50 pilots have resigned in the past few months. Another 50 pilots are serving their notice period. Today, there is a news in the newspaper that a walk-in interview which was held to recruit Air India pilots, not a single person turned up. The HR manager was arrested last week for a recruitment scam. Sir, but there is no response coming from the Air India management as to what they are doing to fill up these vacancies. Sir, new planes are being bought every month. There is an aircraft VTEXA which is lying unused, and some $12,000 per day is the expense being incurred without that being used. Sir, crew is being forced to operate aircraft which they are not trained on. Sir, recently, My God. the untrained people were sent to check the spare part condition of the. So this is very serious. Through you, I would like to draw the government's attention. The spare parts training that is required to operate a particular aircraft, these people were not trained, but yet they had gone to repair that aircraft, and then they were trying to certify, and it was airworthy. However, timely intervention by the airport authority prevented. Are all these facts? Yes, sir. Sir, this is all on public record, sir. Minister, yes. No, Minister. Government should listen. Sit down, sit down. Government should listen to this. Please sit down. Government should listen to this. He says, see, now please, I don't think it is true, and it should not be true also. But he says untrained pilots are flying aircrafts, and no, sir. Then, sir, their trained technician is not there. They are sent to repair, but since they can't repair, flight is grounded. Yeah. So, anyhow, look into this. That's all. Okay. You only inform the member कोई specific घटना बताते हैं. You can. और अगर specific घटना बताते हैं तो उसको हम संबंधित विभाग को, संबंधित मंत्री को कहेंगे. अगर इस संबंध में कोई specific घटना निश्चित तौर से convey it to the Civil Aviation Minister. Now next step, Digvijay Singh. Sir, let me. Okay, Digvijay, over. Time is over. Time is over. Digvijay Singh, your time is over, Baba. Then only I reacted. Your time is over. No. It is after his time. When his time was about to over, I intervened. Yes. No, I heard him. I have directed the government to examine it and inform what more you want. Sit down. Now, Digvijay Singh. Sir. Now, what more you want? See, your matter is heard, and government said the government will examine it. Sit down. No more, nothing more. No. Digvijay Singh. That's okay. He took 3 minutes. I was supporting him. No. This cannot be. No. I was supporting him. No. I cannot allow more than 3 minutes. I am not allowing anybody. No. It cannot be. You cannot thrust upon me that. No, sit down. Tyagiji, no, I cannot allow that. Mr. Vivek Gupta, sit down. Tyagiji, sit down. Yes. Tyagiji, sit down. Please. Tyagiji, it is not going on record.
Tyagiji, yesterday also airline issue was taken up. I also made an observation on that. Now I allowed him. He made a very important point. I heard it. I directed the government to examine it. What more he wants? He wants to speak further. No, that won't be allowed. No, I will decide it. I am to decide. Sit down. No. You cannot question it. You cannot question it. No. He got the consideration he deserves and more than that. No. Digvijay Singh. Digvijay. Don't do like that. Sir. Even I intervened in that and I supported and asked the government. Why is saying all this? No, that I decided. Sit down. No, yes. Yes, I did not allow. So what? No, sit down. Sit down. It is not going on record. You sit down. You sit down. Not going on record. Sit down. Then you come here and sit and decide. Sir. No. This way you come. No. This way. See, I am allowing everybody 3 minutes, and in his case, I gave special consideration. And now you are doing this. Yeah, because I took up that issue. What is not that? Sit down. I took up his issue from the chair. I directed the government, and then he wants to talk more. What is this? No, please. I allowed him 3 minutes. I allowed him. No, 3 minutes. I stopped him when 3 minutes. I was looking at the display board. No, that is a different thing. You sit down. That is a different thing. Sugandha Roy ji, I stopped him after looking at the display board only. I looked at the display board and found that 3 minutes is over. Then only I stopped him. Your point is somebody has intervened. Maybe true. I must also have intervened. But 3 minutes is 3 minutes. Okay. All right. Digvijay Singh. सर, इस हमारे देश में गंगा का अपना अलग महत्व है और गंगा की सफाई का महत्व समझते हुए माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सबसे पहले गंगा सफाई का काम हाथ में लिया था। उसके पश्चात हम आभारी हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, जिन्होंने गंगा नदी को राष्ट्र नदी घोषित की और उसकी सफाई का एक विशेष कार्यक्रम बनाया। माननीय उपसभापति महोदय, गंगा की सफाई तब तक नहीं हो सकती जब तक कि यमुना की सफाई ना हो। और पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा आंदोलन वृंदावन मथुरा के लोगों ने यमुना सफाई का चलाया था, जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने वृंदावन मथुरा से लेकर दिल्ली तक की पदयात्रा की थी और तत्कालीन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हरीश रावत जी के साथ बैठकर उन पदयात्रियों की बैठक हुई। केंद्र सरकार ने, जल संसाधन मंत्रालय ने कुछ निर्णय लिए और निर्णय लेने के पश्चात एक समय सीमा में उनको पूरा करने का वादा किया। हमें इस बात का दुख है, उसके पश्चात जो जल संसाधन मंत्रालय के मिनट्स में रिकॉर्डेड है, उसके बावजूद भी जब उसका प्रतिनिधि मंडल अभी वर्तमान माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग से मिला, उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सन 22 के बाद कर पाएंगे, 2022 के बाद कुछ कर पाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय जी, मेरी आपसे प्रार्थना है और आपके माध्यम से सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जो वादा पूर्व सरकार ने यमुना सफाई का जल संसाधन मंत्रालय में किया था, उन वादों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं और माननीय जल संसाधन मंत्री जी को आप निर्देश दें कि उनका पालन करें। थैंक यू दिग्विजय सिंह जी। डॉक्टर मिनिस्टर वांटेड टू क्लैरिफाई समथिंग। यस प्लीज। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगा और यमुना दोनों विषय पर मेरे डिपार्टमेंट का भी आधा संबंध है। गंगा के बारे में वाराणसी से हल्दिया तक 4,200 करोड़ रुपए का काम शुरू हुआ है।
अगले महीने में वाराणसी में वाटर टर्मिनल का इनॉग्रेशन भूमि पूजन कार्यक्रम भी हो रहा है। यमुना के बारे में दिल्ली की सरकार और भारत सरकार मिलकर काम कर रही है। यहाँ जो पानी, गंदा पानी यमुना में जाता है, उसको शुद्ध करने के लिए दिल्ली के सरकार के और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डीडीए इन्होंने मिलकर योजना तैयार की है। और जहाँ तक यमुना में पानी रोकने की बात है, यहाँ वजीराबाद में वहाँ पानी का एक बड़ा डैम बनाया गया है और हमारे डिपार्टमेंट की ओर से पानी शुद्ध करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है और उन्होंने 3 प्रोजेक्ट लिए हैं और यहाँ से यमुना आगरा तक उसको वाटरवेज बनाने का काम हम कर रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुआ है। हॉलैंड की कंपनी को उसका काम भी दिया गया है और मैं सम्मान्य सदस्य को नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ कि इसके पहले केवल मीटिंगें हुई, कुछ काम नहीं हुआ था। पहली बार ये काम शुरू हुआ। डॉक्टर भूषण लाल जंगडे। डॉक्टर भूषण लाल जंगडे। नो, डॉक्टर सम्मान्य उपाध्यक्ष महोदय, ये यमुना और गंगा में इनलैंड वाटरवेज का पार्ट है जिसका मैं मंत्री हूँ। जहाँ तक शुद्धिकरण की बात है गंगा की, उसमें उमा भारती जी का डिपार्टमेंट काम कर रहा है और दिल्ली सरकार के एलजी के साथ मेरी 3 मीटिंगें हुई है। दिल्ली सरकार के एलजी को बुलाकर हमारी 3 मीटिंग हुई है। तीनों के साथ मिलकर हमने संयुक्त रूप से प्रकल्प तैयार किया है। पेरेंट एजेंसी करके मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है और ये आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। भूषण लाल जांगडे, डॉक्टर भूषण लाल जांगडे। नो, दिग्विजय जी आप बैठिए। दिग्विजय जी आप बैठिए। आपको रिप्लाई मिले, आप बैठिए। आपको रिप्लाई मिले, आप बैठिए। छत्तीसगढ़ में नाबार्ड के माध्यम से नहीं, आप बैठिए। हाउस प्रोजेक्ट के नाम आप बैठिए, आपको रिप्लाई मिला। 45,000 आप बैठिए। लाख रुपए का फाइनेंस किया जा रहा है। आप बैठिए प्लीज। यस, भूषण लाल जांगडे। कृषि विभाग द्वारा 1 या 2 चिन्हित ठेकेदारों द्वारा ही पॉली हाउस निर्माण हेतु बाधित किया जाता है। उक्त ठेकेदारों द्वारा निर्मित पॉली हाउस में लगे मटेरियल निम्न स्तरीय होते हैं। उक्त निम्न स्तरीय मटेरियल खुले बाजार में फाइनेंस राशि से आधे कीमत में मिल जाते हैं। किसान अपनी पसंद के अनुसार कार्य नहीं करा पा रहे हैं। इस पॉली हाउस निर्माण का लागत का 50% राशि अनुदान तथा 50% राशि बैंक द्वारा किसान के नाम से फाइनेंस कराकर ठेकेदार को आवंटित किया जा रहा है। अभी वर्तमान में उक्त ठेकेदार के एजेंट गांव-गांव में घूमकर पॉली हाउस लगवाने के लिए किसानों को फंसाया जा रहा है। इस पर रोक लगाना आवश्यक है। अगर उक्त पॉली हाउस की लागत राशि किसान के खाते में सीधे जाता है तो किसान अधिकारियों की निगरानी में अपनी पसंद अनुसार उच्च स्तरीय पॉली हाउस का निर्माण करवा सकता है। इस संबंध में एक बात और रखना चाहूँगा कि इससे पहले भी देखा गया है कि किसानों को अन्य योजनाओं में जैसे डेयरी फार्म, सफेद मूंगफली उत्पादन, ट्रैक्टर खरीदी आदि कई प्रकार की योजनाओं में किसानों को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई और किसान बैंक का लोन पटाने में ही अपनी संपत्ति का नुकसान कर बैठे हैं। किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाना अच्छी बात है, परंतु किसान योजना का लाभ तभी ले पाएंगे जब उसके द्वारा उत्पादित सामान का उचित कीमत उन्हें मिल पाएगा। सरकार को उसकी गारंटी देना चाहिए। किसानों को उसके पॉली हाउस में पैदा होने वाले फसल या उपज की बिक्री का समस्या का सामना पड़ सकता है। सरकार को फसल की बिक्री तथा उचित कीमत मिले उसका ध्यान रखना चाहिए, तभी योजना सफल हो पाएगा और किसान को पूरा लाभ मिल पाएगा, जिससे वह बैंक का ऋण को छूट पाएगा। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पहले जैसे योजनाओं जैसे उसका हश्र होगा और किसान अपनी जायदाद को खो बैठेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्री टबन कुमार सेन। Those who associate name may be ordered. To draw the attention of the House to most illegitimate and unilateral decision of the Government of India, rather the Finance Ministry, in changing the investment pattern of the lifetime savings of the workers in the industries and services, in the Employees Provident Fund, diverting the 15% of the fund to share market and another 5%
in other stock market instruments by their notification dated 22nd March 2015. Such decision to divert workers' lifetime savings in share market is going to endanger the security of the funds on which a worker banks upon after his superannuation. Sir, the Employees Provident Fund is governed as per Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, and the fund is constituted by the deduction from workers' wages and a matching contribution by the employers, which is always construed as a part of their wages, apportioned for the forced saving for the social security purpose. So the entire fund is totally owned by the workers only, and government has no business to decide its investment pattern. And law also provides like that. The Central Board of Trustees, a tripartite statutory board constituted under Employees Provident Fund Act, is meant for that. And that CBT has time to time decides its investment pattern, and latest of which they have decided in November 13 to be made effective from 1st January. What business government is having to decide and divert that fund for the speculation and gambling purposes, which is entirely owned by the workers? And this is further encouraged by Finance Minister's budget speech, where he decides that 6,000 crore out of that fund will be generated for other general welfare instruments. And also they will change the PF pattern. I think government does not have any authority to do so. Government must restore the investment pattern. Government must stop from diverting workers' lifetime saving for speculation and gambling to keep the stock market hot, so that other brokers and speculators can make fortune out of the workers' money. This must stop, and I demand upon the government through you. CBT met yesterday and they have already rejected this purpose, and please note it that the chairman of CBT is the Union Labour Minister himself. He is a part of that decision in rejecting this investment pattern and sending it back to the Finance Ministry. Government must restore, alter its decision and must restore the investment pattern decided unanimously by the Central Board of Trustees constituted under the Act. Thank you, sir. Thank you very much. Shri Naresh Agarwal. Yes. माननीय सभापति जी, एसोसिएटिंग नेम में भी आर्डर। एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं उठा रहा हूँ 0 आवर में। मुझे खुशी स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। मिलावट इस देश के लिए एक अभिशाप बन गया है। श्रीमान, आज ये स्थिति हो गई है कि हमको अखबारों में एडवर्टीजमेंट पढ़ने पड़ते हैं कि हमारा घी ले लो तो शुद्ध मिलेगा, हमारा शहद लो तो शुद्ध मिलेगा, दाल, चावल, तेल, घी, यहाँ तक दवाइयाँ भी मिलावट की श्रेणी में आ गई। और श्रीमान, एक ये बीच में ऐसा जमाया है, जाल फंसा हुआ है कि केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार का सब्जेक्ट है मिलावट रोके, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। इनके पास लैब्स नहीं है जहां पर आज हजारों सैंपल ऐसे पड़े हुए लोगों के, जिन सैंपल की जांच होकर रिपोर्टें नहीं आ पा रही है, सालों सालों सैंपल पड़े रहते हैं। और इस मिलावट के मारे आज कैंसर इस देश के लिए एक महामारी हो गई। तमाम ऐसी डिजीज होने लगी मिलावट के कारण कि अब समझ में नहीं आता, दूध बच्चे को पिला दो, पता नहीं किस चीज का बना हुआ है, क्या हो जाए। तो ये तो एक ऐसा, श्रीमान, विदेश में अगर मिलावट करते तो शायद कत्ल से बड़ी सजा है। यूरोप अमेरिका में मिलावट शब्द सुना नहीं जाता। सिंगापुर बहुत छोटा देश है जहां अगर कोई मिलावट करते तो क्या होगा, लेकिन अपने देश में एक प्रचलन हो गया। मुझे लगता है दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा। कहीं ना कहीं तो कमजोरी है। या तो केंद्र सरकार राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बात करे, और अगर इसको नहीं दूर किया गया तो श्रीमान, ये एक देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की एक विषय बन जाएगा। और आज ऐसा नहीं क्या क्या चीजें किस में मिलाई जा रही, सब जानते हैं। मसालों में किसी में ईंटा का पीस के मिला दिया जा रहा, किसी में कुछ मिलाया जा रहा, रोज पाउडर, तमाम मिलावट से, तमाम दूध का बुरा हालत मिलावट का। तो मैं जानना चाहता हूं आखिर देश में मिलावट को रोकने के लिए कौन सा उपाय किया जाएगा, और क्या सरकार इस पर गंभीर है? अगर नहीं तो मैं नहीं करता कुछ, लेकिन ये सबके लिए, यहाँ तक कि इस कैंटीन में अगर खाना खा लें, जो पार्लियामेंट की कैंटीन है, जिसको रेलवे की कैंटीन कहा जाता, यानी कितने सदस्य बीमार हो चुके हैं यहाँ उसी मिलावट के कारण। तो शुद्ध चीजें हम
अगर विदेश में खाना खा ले तो ठीक रहेंगे, अगर हिंदुस्तान में खाना खा ले आके तो डिजीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय करना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से सरकार से अपील कर रहा हूं कि चाहे जितना बड़ा कड़ा कानून लाना पाए, आप कानून लाइए, बदलिए और ऐसा करिए कि उस कानून के तहत 6 महीने में अगर वो दोषी है तो उसको सजा जरूर मिल जाए। आपने तमाम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरा मैं चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री का जवाब दीजिए। अगर स्वास्थ्य मंत्री जी उठ के इस पर कह दे कि इसके लिए कुछ हम करेंगे तो शायद ये देश के लिए ज्यादा कुछ करें। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री। माननीय सदस्य ने जो कहा है वो विषय सच में बहुत गंभीर है और सरकार इसकी गंभीरता को पूरी जिम्मेवारी के साथ समझ रही है। इसके लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसमें बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग लेबॉरेटरीज की करनी है और उसके साथ साथ उसके जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ भी इसमें बहुत सी ट्रेनिंग का पार्ट है। सरकार ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। कुछ नियमों में भी चेंजेस की आवश्यकता है। उस पर सरकार बहुत तीव्र गति से रोक लिया है। नहीं, उसमें कुछ उस पर कार्य जारी है। जल्द से जल्द हम उस विषय को लेकर के आए। श्रीमती, थैंक यू मिनिस्टर। श्रीमती जर्नादास वैद्या, श्रीमती जर्नादास वैद्या। Thank you, sir. ओके, जर्नादास My वैद्या। Jirua is very sensitive issue, sir. Increasing numbers of minor tribal girls found pregnant in Odisha schools. I would like to draw your attention to the outrageous and shocking incident of unwanted pregnancy among tribal girls in the state-run Kanyashram school in Odisha. From where such incidents are reported, principal of school reporting such cases should be immediately suspended and action will be taken against others, especially hostel superintendents. The latest case was reported on Friday from Gupteshwar Srivastava, a residential school for SC/ST students at Kandulbeda under the Bayapuri-Guda police station in Koraput district. A 15-year-old tribal girl, a student of class 8 and a resident of Purunaguda village under Ramogiri Panchayat was not coming to school ever since she had gone to her village during the Christmas holidays in December. She complained of abdominal pain late on Thursday night following, which her family called an ambulance to shift her to the Bayapuri-Guda hospital, but she delivered a boy child on her way to hospital. Her parents have lodged a complaint at a Bayapuri-Guda hospital police station, and the district administration has started inquiry. At least 4 cases of schoolgirls becoming pregnant have surfaced in various ashram schools of the state. On February 4th this year, a 12-year-old tribal girl student of class 6 studying in Amupuri Sevashram of Koraput district gave birth a boy child at the hostel. The headmaster of a government-run school in Koraput has been suspended, while a show cause notice has been served to a hostel warden of illegally surfacing the pregnancy of a tribal student who delivered a baby at the district hospital on January 24th. The girl was a class 8 student at the Kostuba Gandhi Balika Vidyalaya, Koraput. Already a month has lapsed since the assault. I request to intervene urgently and demand strict action against the culprits and ensure that justice is done with the minor tribal girls. Thank you. Okay, thank you. All those who support name may be ordered. Yeah.
You associate. Okay, you also support Turkey, yes. Associate, bus, you associate. जो ऑनरेबल एमपी So it's a very important issue. You associate. घटना है, ऑलरेडी ओडिशा गवर्नमेंट के ऊपर आवर हुए हैं और ऑलरेडी हमारे मुख्यमंत्री इंक्वायरी के लिए ऑर्डर No, कर no, चुके हैं। take proper action. That is all what Yeah, she's yeah, asking. And also to prevent such an incident. That is what she's asking. Yeah. Now, Sri Sharad Yadav. Sharad Yadav ji. उपाध्यक्ष जी, चुनाव आयोग जो है मैं उसका सम्मान करता हूं, उस पर किसी तरह का कोई आक्षेप का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने लोकसभा के चुनाव के पहले एक बढ़िया और बहुत बेहतरीन फैसला दिया। ईवीएम के मामले में देश भर में बहुत तरह की गलतफहमियां हैं। बहुत पार्टियों ने जाकर के इलेक्शन कमीशन में बात की है, मैं उसमें कभी नहीं रहा, लेकिन हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि जो ईवीएम में और मजबूती लाने के लिए जब वोट डाला जाता तो पर्ची निकलना चाहिए कि उसने वहां वोट डाला कि नहीं डाला। ये हाई कोर्ट का फैसला था। थोड़े बहुत नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह ये प्रयोग किया गया, लेकिन ये बड़े पैमाने पर मशीन बुला ली गई, कलकत्ता में उनको डंप किया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को कि आज बैंक चले जाइए, जनरल स्टोर में चले जाइए, जो इकोनॉमिक जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो गई है कि एटीएम में चले जाइए, आप किसी तरह की भी क्रेडिट कार्ड को लेकर चले जाइए, पर्ची निकल आती है। और ये बात पूरे देश भर में भारी और वोट जो है वो इस देश का संविधान का इंजन है और इसमें किसी तरह की भी पारदर्शिता नहीं रखी जाएगी तो ये शंका लोगों में बढ़ते जाती है। और उपाध्यक्ष जी, इस पे इतनी तरह की शिकायत आती है। आपके मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया है, इसकी बताया भी है कि इसमें कैसे गड़बड़ की जा सकती है। इसके बावजूद भी एक केस, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक केस इलेक्शन वर्सेस एक यहाँ सदन में रहे हुए आदमी उनके द्वारा लगाया गया और अदालत ने फैसला दिया कि ये बिल्कुल ट्रुथ है, बिल्कुल सच बात है कि हिंदुस्तान का वोट की रक्षा जो है वो संविधान की रक्षा है। वोट इस देश के संविधान का इंजन है। अब ये वोट जो है इसमें किसी तरह की शंका नहीं, तो कितनी सी बात है, आप ईवीएम लगा ही रहे हो, उस ईवीएम में ये भर निकल आए, जो आदमी लगा रहा है उसको शक होता है कि मेरा वोट गया कि नहीं गया, वो कंफर्म हो जाए कि उसका वोट पेपर से बाहर निकल आए। और यदि मान लो लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है तो उसमें आगे बहुत चीज की है। ये ट्रांसपेरेंसी दुनिया भर में, यहाँ भी इसको करना चाहिए और आदेश है कोर्ट का, लेकिन इसको थोड़ा बहुत पालन किया गया, इसको पूरा पालन करना चाहिए। और इसमें कोई ज्यादा पैसा भी नहीं है, इसमें किसी तरह जब ईवीएम में इतना पैसा खर्च कर रहे हो आप, तो जब पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है, तो एक दुकानदार, एक जनरल स्टोर वाला इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो ईवीएम का जो है वो इलेक्शन कमीशन जो 125 करोड़ों का करता है, वो क्यों नहीं कर सकता? यही मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है। Now, Srimati Kanimadi, one more. Srimati Kanimadi. The problem faced by fishermen in this country and the dangers faced by them, by neighbors, has been discussed in this house many times. The fishermen of Tamil Nadu are waiting for a permanent solution for the problems they face when they enter the seas. At this juncture, I think there's a need for setting up of a National Commission for Fishermen's Welfare. According to a study by the Ministry of Agriculture in 2012, more than 1.5 crore Indians are engaged in fisheries-related livelihood activities. Fisheries sector contributes to more than 1% of our total GDP. However, living in remote areas, the fisher communities are deprived of specific schemes and programs of the government. Hence, the Indian fishermen community, both marine and inland, happen to be neglected and forgotten community. According to the Central Marine Fisheries Research Institute, 61% of the fishermen families come under the BPL category.
When we look at other development indicators such as education and health, they are definitely one of the most backward communities. Although various government ministries and departments have started certain schemes which target the fisher community, these suffer from weak implementation. For example, under the National Scheme for Welfare of Fishermen, only about 7,000 houses were approved for construction. In 2013-14, no funds were released to Tamil Nadu in the entire 11th plan for the central schemes for biometric ID cards and registration of fishing vehicles. Taking all this into consideration, I request the government to consider setting up of a National Commission for Fishermen Welfare. Such a commission is urgent necessity in order to protect and promote the interests of the fisher communities and to address specific challenges such as climate change, international conflicts and livelihood concerns of the fishermen. More importantly, such a commission would give this disadvantaged community a platform to voice its concerns and thus assist in improving its livelihood status. Thank you, sir. Thank you very much. Now special mention admitted. I will special mention time. Business advisory committee, today's list of business, the insurance laws amendment bill is here. Now you do one thing. If you want to raise anything, you raise at that time when the bill is taken up. Now special mention, admitted special mention to lay on the table. Srimati Vansuk Saim, to lay on the table. Yes, sir, I lay on the table the special mention plea for the early completion of ongoing project in the Northeast Frontier Railway section of the Northeast. Okay, Sri Mohammad Nadimul Haq. Hey, no. Srimati Kanakalata Singh. सर, देश में नक्सल विरोधी अभियानों में होने वाले बारूदी सुरंगों के विस्फोट में सैकड़ों जवान प्रतिवर्ष मरते या अपंग हो जाते हैं। यह सीआरपीएफ के आंतरिक कार्यकुशलता एवं सरकार का अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा के प्रति उदासीनता दर्शाता है। डी बंदोपाध्याय, श्री ए.के. सेल्वराज, Coimbatore laid on the table, sir. Okay, Srimati Kanimuri. So I'd like to lay on the table the delay in UN report on war crimes in Sri Lanka. Now, Srimati Vijaya Satyanath. Reaffirming the commitment to women leadership on Women's Day, we urge the government to go ahead with Women's Bill immediately. Lay on the bill. I lay on the table. Sri Paul Manoj Pandian. Sir, special mention is for immediate action to Central Hospital in Mukkudal, Tirunelveli districts. Okay, thank you. Sri Shantaram Nayak. Scales of Navodaya Vidyalayas, I laid. Oh, thank you. Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien, no. Sri Ahmad Hassan. Sri Ahmad Hassan. Yes. Special mention measures to counter deaths of elephants. Lay on the table. Dr. R. Lakshmanan. To expedite approval for increase in MBBS seats in the government medical colleges in Tamil Nadu. I lay it on the table. Sir Dilip Kumar Turki. Regarding setting up a National Fitness Training Institute. Lay on the table. Thank you. Sri S. Sangavelu. Implement for Pamba Achangoil White Power Project. I am laying the table. Sri K.N. Balgopal. Very good. My special mention demanding the abolition of central excise duty on generic Ayurveda products. I am laying it. Okay. So now Sri Tarun Vijay. भाषाओं के अंकों की संपदा की रक्षा के लिए सरकार तुरंत कार्यवाही करे। मैं लेकर All Indian languages. Yes, sir. Good. We are losing the numeric wealth of our languages. Nobody is able to recognize what is 1, 2, 3. हम अंकों में 1, 2, 3 लिखते हैं, तमिल में हम लिखते हैं, वो हमारे बच्चे उसको पहचान नहीं पाते। तो पूरी अंकों की संपदा हमारी समाप्त हो रही है। सब केवल अंग्रेजी के अंक इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री एम बी अच्युतन, श्री एम बी अच्युतन, school. I am laying down. Thank you. श्री विवेक गुप्ता, विवेक गुप्ता. Sir, I laid my special mention. You can say the subject also. Okay, so on fine. the revamp outlook towards primary education. Okay, thank you. Sri Anil Desai.
Yes, time over. Now it is time for question hour. Remaining. Thank you.